My name is Gulsha and today we are discussing most important MCQ। तो आज हमने डिस्कस करना है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर हमने क्लियर किया, तो उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है MCQ को। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। नंबर वार MCQ को हमने चैप्टर वाइज ने बनाया है कि हमने जो भी चैप्टर क्लियर करेंगे उसके बाद जो इसको हम लास्ट में जो है वो उसको MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं उसके MCQs ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशंस। Number one, first of all, which hormone is responsible for controlling blood sugar level? Number A, estrogen, testosterone, insulin, thyroxine. So correct answer is C, insulin. उसके बाद the adrenal gland are located on top of organ in human body. A, liver, B, kidney, C, lungs, D, heart. So correct answer is kidney. Kidney is the located on top of kidney is located on the organ in human body. Okay, उसके बाद growth hormone is produced by the thyroid gland, adrenal gland, pituitary gland and pancreas. So correct answer is the पेनक्रियास। तो पेनक्रियास क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पेनक्रियास। सो करेक्ट आंसर इज द थायराइड ग्लैंड। ओके, उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर कैल्शियम रेगुलेट इन बॉडी। वो कौन सा हार्मोन है जो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम होती है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। सो करेक्ट आंसर इज नोन एज सी, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ओके, उसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ ग्लाइकोजन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन? लोअर ब्लड शुगर लेवल, बी राइज इन ब्लड शुगर लेवल, number C, regulate the calcium level, number D, stimulate the growth. So correct answer is the B, rise in blood sugar. Okay, उसके बाद जो हम डिस्कस करना है वो है the hormone responsible for regulate the blood sleep awake cycle. A, melatonin, B, estrogen, C, testosterone, D, progesterone. So correct answer is the melatonin, the sleep awake cycle of the body. उसके बाद which hormone is responsible for the development of female secondary sexual character? वो कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल बॉडी? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन। सो करेक्ट आंसर इज द एस्ट्रोजन। उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है which endocrine gland is responsible for regulating calcium level in blood? Adrenal gland, thyroid gland, prothyroid gland एंड पेनक्रियास। सो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में। सो करेक्ट आंसर इज सी, प्रोथोराइड ग्लैंड। Which hormone is responsible for the fight or flight response or stressful and known as cortisol, melatonin, oxytocin, serotonin? So correct answer is A, cortisol hormone. Which hormone regulate the body water balance and blood pressure? A, aldosterone, B, growth hormone, C, oxytocin, D, estrogen. So correct answer is the A, aldosterone. In female, the ovary produce a hormone estrogen and progesterone, testosterone and estrogen, insulin and glucagon, D, cortisol and adrenaline. So correct answer is B, testosterone and A, जो फीमेल बॉडी में जो ओवरी होता है उसको प्रोड्यूस करने में जो हार्मोन काम करता है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, उसके बाद वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड? A, in the abdomen, B, in the chest, C, in the neck, D, behind the liver. Thyroid gland located that is known as neck, chest, थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो नाक के नीचे होती है,
So correct answer is C, in the neck. Which hormone is responsible for the stimulating milk production in mammary gland? Oxytocin, prolactin, estrogen, progesterone. So correct answer is milk producer hormone, that is known as oxytocin hormone. Oxytocin hormone is the stimulating milk production in mammary glands. So hormone is known as oxytocin hormone. उसके बाद which hormone is responsible for stimulating red blood cells production in bone marrow? A. Insulin, thyroxine, cortisol, erythropoietin. So correct answer is C, cortisol. उसके बाद which hormone is responsible for the development of female secondary sexual characters? So estrogen, progesterone, C, testosterone, D, prolactin. So correct answer is B, progesterone. Which hormone stimulated the release egg from ovary during the menstrual cycle? A. Progesterone, B. Oxytocin, C. Estrogen, D. Follicle stimulating hormone. So correct answer is D. Follicle stimulating hormone. What is the primary function of hormone oxytocin? A. Stimulates milk production, B. Regulate metabolism, C. Control blood sugar level, D. Promote uterine contraction during childhood and bonding. So correct answer is D. Promoting uterine contraction during the childhood and bonding. Which gland is responsible for regulating the body's metabolism? A. Thyroid gland, B. Pituitary gland, C. Thymic gland, D. Adrenal gland. So correct answer is the thymic gland. Which endocrine gland is responsible for melatonin production? A. Pineal gland, B. Adrenal gland, C. Thyroid gland, D. Pituitary gland. So correct answer is A. Pineal gland. Which hormone is responsible for stimulating milk ejection during the breastfeeding? A. Estrogen, B. Progesterone, C. Oxytocin, D. Prolactin. Milk ejection during the breastfeeding. So correct answer is C. Oxytocin hormone. The fight or flight response associated with division of nervous system, that is known as A. Central nervous system, B. Peripheral nervous system, C. Autonomic nervous system, D. Somatic nervous system. So correct answer is C. Autonomic nervous system. The master gland, the control make other endocrine gland, is known as A. Thyroid gland, B. Adrenal gland, C. Pituitary gland, D. Pancreas. So master gland is known as pituitary gland. Which gland play a critical role in immune system and responsible developing T cells? So A. Thymic gland, B. Pineal gland, C. Hypothalamus, D. Parathyroid gland. So correct answer is A. Thymic gland. Which hormone is primary production in the pancreas and regulate blood metabolism? A. Estrogen, B. Insulin, C. Thyroxine, D. Parathyroid. Primary producing pancreas regulate the blood glucose level. So correct answer is insulin. थैंक यू. उसके बाद आपने सब्सक्राइब करो. MCQs मेरे जो भी आपको अच्छे लगें तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.